अफेयर रे इंडिया रो मध्य पाकिस्तान सहित किछि रहिछि बॉर्डर रे एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल रे तेणु ताकू मध्य रिजोल्यूट करिया पई इंडिया केते बेले रहउछि विशेष करी रशियन बट कम्युनिस्ट कंट्री सपोर्ट रे केते मध्य रहउछि नेगोशिएट करछि अमेरिका गुटे डेमोक्रेटिक कंट्री सपोर्ट रे तेणु इंडिया जेते हम डिप्लोमेटिक वे को जीवा को पड़िबो सेते बेले देखिबा आम देशर प्रोडक्ट को देश रे जाई सेलिंग हेई परिबो तांका देशर प्रोडक्ट आम देश को आसीबा दरकार इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन तेणु ये सब दृष्टि जदि देखिबा कौन से राष्ट्र कौन से देशर गोटे पॉलिसी हो कौन से राष्ट्र गोटे प्रकार डिबेट हो कौन से एनाक्टमेंट आसु किछि किछि प्राइम मिनिस्टर वाइटल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल करछि सो director of foreign affairs as the powerful and real head of the state the prime minister always plays a key role in determining India's foreign policy जो वैदेशिक relations with other countries. He may or may not hold the portfolio of foreign affairs, but he always influences our foreign policy decisions. जेतबेले जवाहरलाल नेहरू थिले से प्राइम मिनिस्टर थिले प्लस हम इंडिया रो फॉरेन मिनिस्टर किंतु वर्तमान तमे जानिथिबा एक्सीलेंट फॉरेन मिनिस्टर होचंती एस जयशंकर तेणु फॉरेन कंट्री की जाउचंती डेलीगेटिव रे जाउचंती पब्लिक स्पीच रे जाउचंती एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर नॉलेजेबल पर्सन सिविल सर्वेंट थिले सी आउ सबुठर बड़ जिनिस होची इंटरनेशनल अफेयर बाबद रे तांकर बहुत किछि नॉलेज अछि तार एस जयशंकर ताले पिले आमे देखिबा पर्टिकुलरली जैसे कोटे कंट्री रो इन्फ्लुएंस रहिला कंट्री रो किछि इंपैक्ट रहिला जो कंट्री रो प्राइम मिनिस्टर को वैदेशिक नीति बाबद रे जते नॉलेज अछि से कंट्री सेते अफ्लुएंस व समृद्ध दे नेक्स्ट पावर ऑफ पैट्रोनेज ऑल इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर रियली मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर निजे तो हेले प्राइम मिनिस्टर आ को मन को टैलेंटेड पर्सनालिटीज मन को से कोन करंती कन्वेंट करंती टू बी सिलेक्टेड फॉर द डिग्निटरी पोस्ट भलो भलो डिग्निटरी पोस्ट पे मध्य सिलेक्शन करंती को पोस्ट गुडा को पर्टिकुलरली गवर्नर्स अटॉर्नी जनरल ऑडिटर जनरल मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ambassadors councillors etc all high ranking appointments and promotions are made by the president to the advice of the prime minister का advice रे president सब गुडा कोन करता दे अपॉइंटमेंट दे आउची चंदन मृत्युंजय जेमान बुझी गला था हला नेक्स्ट रूल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी समय रे हमें प्रेसिडेंट कर जो पावर गुडा थिला आर्टिकल 352 356 360 आपको डेलिबरेटली डिस्कशन करिचे स्टिल देन देयर इज अप्रोविजनल रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सो फार एज इमरजेंसी प्रोविजन इज कंसर्न जेतबे जरूरी कालीन परिस्थिति कथा हम कहि थाउ राष्ट्रपति बाबद में बहुत किछि सुनछि किंतु प्रधानमंत्री मध्ये किछि रोल करिथांदी कोन the emergency powers of the president are in reality the power of the prime minister. Prime minister recommendation ne president सब किछि परफॉर्मेंस the president declares an emergency only under the advice of the cabinet. उनते कार्य ये कैबिनेट शुभम एडवाइस न करि छै प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट रूल इंपोज करि परिबे नाही आ कैबिनेट रो सुप्रीम रूल के रहला प्राइम मिनिस्टर कथा बुझो So the emergency powers of the president are in reality the powers of the prime minister. The president declares an emergency only under the advice of the cabinet, which in reality means the advice of the prime minister. All decisions taken to meet an emergency are really the decisions of the prime minister. Emergency ପାଇଁ जो डिसीजन गुडा निया जाय बटे से डिसीजन गुडा होची कार प्राइम मिनिस्टर मन देखि सुनो आज जाय घरे पढिबो पेज बीट पढ़िबो गोटे पेंसिल जोटा टिके रो डाउट ला अंडरलाइन the prime minister can get the imposition of a president rule in a state the presidential decision in favor of imposing an emergency in a state is always governed by the decision of the prime minister and his cabinet so emergency provision ase setebele particularly decision of the prime minister that is also the decision of the cabinet and it is superimposed by the prime minister को डिसीजन को बेस करी कैबिनेट रो परफॉर्मेंस आ हमर मध्य स्टेट इमरजेंसी पे हमें कोन करू किछि ना किछि प्रोविजन पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द ऑफिस ऑफ पीएम इज वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बहुत पावरफुल स्टडी ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्लियरली ब्रिंग्स आउट द फैक्ट दैट ही होल्ड्स द मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन इंडिया he exercises real and formidable powers in all spheres of governmental activity गवर्नमेंट पर जते गुडा एक्टिविटीज रहिला
कौन कौन एक्टिविटीज तमे देखिथिबो डिक्लेयर हे गेला पुनी वेतन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानक पई बहुत किछि मोदी सरकार करले हला आउ हमर मोहन सरकार मोहन माझी सरकार मध्य जे मन 80 वर्ष हे गेलानी पेंशन पाइबे ताको पई मन 3500 हे गेला हैं 80 वर्ष जे जोडी बंची दिबो भाग्यवान से 3500 हैं कल गेला ना जाओ 3500 टका पाइबे लोक माने देखो पिले हमें देखिबा द प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ स्टेट द कीस्टोन ऑफ अ कैबिनेट आर्ट्स से होचनी की पोजीशन रे रही जांदी देन the prime minister is the captain of the ship of state, the keystone of a cabinet arc, the steering wheel of a government, and the moon amongst the lesser stars. Primus inter pares ta maso harto mobile. Moon among the lesser stars. छोट छोट तार गुडा अछि चुप चुप लाइट दउछन केतले जन्म अमासी तार कंकाल के देखछि तमे समझते गोटे गोटे मून सदृश स्टार भलिया हैला ऑल ओडिशा टॉपर हे जो समस्त पचारिबे के ऑल ओडिशा टॉपर ना चंदन कुमार महाराज बुझि पहिलो के ओडिशा टॉपर ना फिरदौस ए मन को ना जानि के ऑटोमेटिकली समस्त से जणे यदि टॉप को पड़ गेला त हावेर अर्थ बुझि के एगला ना मनीष सिंह तो ए जो मानकर विशेष कर जे जो पावर को पोजीशन को जीव ऑटोमेटिकली एटा हाइलाइटिंग अब नहीं हाइलाइटिंग नेक्स्ट the whole organization and working of the council of ministers depends upon the prime minister को ऊपर डिपेंड करता है the president always acts in accordance with the advice of the prime minister सब बेले मन रख यदि हमर अंशुमान हला प्रेसिडेंट कान्हा हला प्राइम मिनिस्टर कान्हा जदि हला प्रेसिडेंट अंशुमान हला प्राइम मिनिस्टर दी जण जाक कोऑपरेटिव ताकर कार्यक्रम चलै पढ़ा पढ़ी केमिति करबा को दिन क्लास को जीबा को दिन क्लास को जीबा नहीं ताका दी जण कर डिसीजन ता परफेक्टली डिसीजन आ दी जण जाक एडवाइजर रे चलै छै नहीं भलो प्राइम मिनिस्टर ये अपन पार्टी प्रेसिडेंट रे कोन दा पार्टी लीडर रे मेसेज हां ओहो ठीक अछि मेजॉरिटी तथापि से तुमको अपॉइंटमेंट देला को तुमको एते अबाग लागियो के मो संगे पाठ पढला मते अपॉइंटमेंट दोउची त पार्टी लीडर हेले कोन अब मेजॉरिटी हिसाब से सपोर्ट करे अंशमान बहुत बड़ा पॉलिटिक्स रो आईडिया खर्च कला थैंक्स अंशमान फुलफिल मे गॉड योर विशेस भगवान तुमरा इच्छा को प्रकाश करन पूर्ण करन The minister making is the sole right of the prime minister. The resignation or removal of the prime minister always means the resignation of the council of ministers. Hence, prime minister is the center of gravity and the foundation stone of the council of ministers. हमें जितने ताला बिल्डिंग करिबा vital होची फाउंडेशन रुडिमेंट जदि हमर ठीक अछि फंडामेंटल जदि हमर ठीक अछि बेसिक जदि हमर ठीक अछि विल प्रॉस्पर जदि हमें कोन करिया फाउंडेशन स्ट्रांग देइना उपरु उपरु घर करि जाउ काली गोटा रसूल घर ना पडुआ खंड पुठा गଳି पड़छ कोन यूट्यूब चैनल गुला सते कि के जन गुडुगुडु गुडुडी पड़छ म्याउ म्याउ ता भीतर लोक चिल्लाउछन तने जते हमें ताला कोठा गेले कोन हबो ए घर रो फाउंडेशन भलो अछि बोली गवर्नमेंट इंडिया रे अछि जदि फाउंडेशन जो मुसा जंदी तळे होटल पाखरे गाळुछन जदि फाउंडेशन को गाड़ी देले तापर कामर मध्ये पेपर ना मारियो तने पले देखिनी the presidents of India always acts upon the advice of the prime minister advice the president always acts upon the advice of the prime minister the constitution assigns the latter the role of being the chief advisor to the president all the powers of the president both the normal powers and the emergency powers are really the powers of the prime minister amara president को जो normal power रहिला emergency power रहिला wholeheartedly correspondently reciprocally that is the prime minister's power and कारण जो टाइम प्रेसिडेंट परफॉर्म करती ताको डिसीजन नै करी प्राइम मिनिस्टर करती as the head of the government leader of the cabinet leader of the majority leader of the parliament leader of the nation the prime minister plays an important powerful role in Indian political system रे तांकर vital position रहिला Indeed, the Prime Minister occupies a very powerful, rather the most powerful position in India. देखिबो deliberately जेते डिसीजन चल सब बड़े लोग इवन मु जदी कहबी फ्रॉम बैटल शॉप टू सेक्रेटेरिएट जदी हमें चाहिबा गोटे पान दुकान रु
सेक्रेटरी लेवल जेके देखो सब बेले डेली न्यूज पेपर की जो कि प्राइम मिनिस्टर देन भाइटल रहिला प्राइम मिनिस्टर को आम सब बहुत ये प्रशंसा कले प्राइम मिनिस्टर पावर पोजिशन को आम देखिले प्राइम मिनिस्टर को रोल को देखिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप रे स्टिल देन द प्राइम मिनिस्टर कैंट बिकम ए डिक्टेटर सी गोटे केबे हेले एक छत्रवादी हे परिबे कारण कोन पई न होई परिबे मन इच्छा काम कले नो कॉन्फिडेंस मोशन अछि जी अपॉइंटमेंट देई चंती डिस्पोजल प्रेसिडेंट करा देखो undoubtedly, the Prime Minister of India enjoys a very strong position, yet he can neither be a dictator nor even behave like a dictator. केबे जणे एक छत्रवादी हे परिबे His office is a democratic office to which he rises only through an effective participation in the democratic process. Prime Minister for leadership quality, जनकर leadership quality, जनकर personality determines the success of the party. ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର सक्सेस डिपेंड करथिला जणे लोक होल हैंडली दैट इज द पावरफुल फंक्शन दैट इज द पर्सनालिटी ऑफ नवीन पटनायक मोदी सरकार रा वर्तमान सक्सेस करछि गोटे पावरफुल पर्सनालिटी बा लीडरशिप क्वालिटी ऑफ नरेंद्र मोदी तनु जणे जणे लोकंकर प्रकृति रे क्वालिटी चारिस्मेटिक लीडरशिप टोटल होल हैंडली टोटल पब्लिकली टोटल आई मीन पार्टिसिपेटरी वे रे डेलीगेटरली कोन करे सक्सेस आनी जोटा का मैं कहू कोन के मेजॉरिटी जन जनक ना रे तमे एटलीस्ट मु कहबी लोक जानी नथिले अलगा लीडर को जानी नथिले कोन ना नवीन एबे भी सुधा बुढ़ा बुढ़ी को पचारियो ओडिसा रो मुख्यमंत्री के नवीन ट्राइबल एरिया लोक माने नवीन पटनायक जो लोक जन्म हेछि तांको 24 वर्ष शासन काल भितरे जन्म हला बेल को नवीन पटनायक देखिथिला जो माने 20 22 23 से जन्म रु 22 23 वर्ष जाके 21 22 वर्ष रे आईएएस ऑफिसर पाई गेला धरा जो 22 23 वर्ष से भी घोषिक रखे के चीफ मिनिस्टर की नवीन पटनायक एटा जुग प्रकृति रे एटा गोटे जुग जुग नै तमे कोनी कोनी पिला माने को तम मानक पेटे कैबिनेट घोषिया कष्ट होला तर जे गोटे थर पढि दउतला चालची त चालची आ कोन नेक्स्ट स्टूडेंट्स The party to which Prime Minister belongs, his own ministerial callings who are also the competitors, the leader of opposition party is the President of India. The Parliament, the press, the Constitution, and the public in general all act as limitations of. They prevent him from becoming the dictator and from acting in an arbitrary way. Mona ichha, nirankush babadre kei ko kaam kari paribe. Tame Prime Minister hello, you must act according to the Constitution of India. Tame President hello. So you must have to act, you must have to perform your task according to the Constitution of India. मनोमुखी काम करि परिबन तमे तम निजर होम रूल एटी इंप्लीमेंट करि परिबन तम घर नियम you must be guided, you should be guided, you ought to be guided, you diligently to be guided by the principles provided or laws given him within the constitutional sector. जे भी काम करिवो से constitution को बेस करी काम करिवो so This prevent him from becoming dictator and from acting as an arbitrary. His personality and skills are continuously untested. Any failure or lapse can cause his exist. जेतेबेले फेल्युअर आसी गला कहार ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप रे प्राइम मिनिस्टर रो बेसिकली से कोन हे एग्जिस्ट दूर जानते जोटा हमर कहलो मु कहबे पर्टिकुलरली जेतेबेले नो कॉन्फिडेंस मोशन रे कोन से गोटे प्राइम मिनिस्टर हारि गले इन द सेंस there is no support in the Lok Sabha ताकू लोक सभा सपोर्ट नहीं तब से मेंबरशिप गोटे कॉमन मेंबर भली रहिबे टू परफॉर्म हिज टास्क और ड्यूटी मगले हमर एटी कोन चली The office of the Prime Minister of India is a powerful democratic office. Actual working depends upon the personal qualities. जो नाम कहू दिले personal qualities and political status of the person who holds this office. समस्त प्राइम मिनिस्टर हे जिबे समस्त प्राइम मिनिस्टर को रोल और फंक्शन हमें घोषित मन रखुचे किंतु सब प्राइम मिनिस्टर को नेचर कोन समान भाविनिया कोन अब डॉक्टर्स वेरीज नाना मुनि को नाना मत आसीबो विभिन्न प्रकार लोक सही पोजीशन को आसीबे कि तांका एबिलिटी किबा तांका परफॉर्मेंस ता वेरी करिबनी हम इंडियन टीम रो गोटे परे गोटे कैप्टन आसीबे समस्त कैप्टन को परफॉर्मेंस को समान रहिबो केबे However, no one can convert his office into an authoritarian or dictatorship office. एक छत्रवादी शासन को बा प्रभुत्व बा जोटा अथॉरिटेरियन सिस्टम को केवल प्रेफर करबानी ए पर्सन कैन रिमेन प्राइम मिनिस्टर ओनली सो लॉन्ग आज ही फॉलोज डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज जे पर्यंत तमे गणतांत्रिक नियम और मूल्यबोध को कोन करथबो ना स्वागत करथबो रेस्पेक्ट सम्मान दउथबो
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଗୋଟେ କିଏ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଲିଡର ବୋଲି କନସିଡର କର। ଏଇ ମନମୋହନ ସିଂ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, କେତେ ବଢିଆ ତାଙ୍କର ନେଚର, କେତେ ବହୁତ ବଢିଆ ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲା। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କେତେ ଭଲ ନେଚର ଥିଲା, କେତେ ବଢିଆ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲା। ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରିମେମ୍ବର କରି ରଖିଥିବା। ଏଇ ଜମା ବନ୍ଦ କେହି ହବନି, ଯୋଉଟା ଡାଉଟ ଚନ୍ଦନ ପଢିବ ପଚାରିବ ହେଲା। ଚନ୍ଦନ ଲମ୍ବୋଦର ଆମର ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ, ନିଖିଲ ବା ହେଲା, ଅନେଇ ପଡିବ ସବୁ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନିଖିଲ, ବୁଝିପାରୁଛ ବା? ବହି ଅଛି କୋଉ ଅଥର? କୋଉ ବହି? ଘରେ ପଢୁଛୁ ତ?